request you all to kindly take your seats. Before we begin with the session, I would request you all to kindly keep your phones in silent mode. I hope we all are re-energized and refreshed after a great lunch, and we are ready for our session. A very good afternoon and a very warm welcome to the 15th Renewable Energy India Expo. The session is going to be about decentralized renewable energy for net zero transition with maximum social impact. Ladies and gentlemen, for this session, I would like to invite on stage Lieutenant Colonel Munish Ahuja, President Clean. Kindly join your hands together. We have Ms. Nidhi Sareen, Program Head, iGen Access. Please join us here, ma'am, on the stage. I would also like to request Dr. Vipin Kumar and Ms. Himani Mehta from MNRE to kindly join us here on the dais. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together? With this, ladies and gentlemen, I would now request Mr. Yashwant Duraswamy, GIZ, to kindly come on the dais and take this session forward. Ladies and gentlemen, can I please request you to kindly put your hands together? Thank you. Very good afternoon to all. I welcome you all on behalf of MNRE, Areas, Clean Network, and GIZ to this important discussion. As you see, the consultative workshop, the first time decentralized renewable energy for net zero transition with maximum social impact. So this is one important topic. In the yesterday's inauguration event also, the minister was highlighting about zero emission and how different industries can contribute. Whereas for the first time in the RE Expo, we have DRE component. And other end, we have the impact at the household or community level, the end user level. So this is the first event in the RE Expo history over the period of 15 years where the small applications will be discussed. And most importantly, this is the forum where there are different people, different stakeholders have come together. For example, the policymakers, Ministry of New and Renewable Energy, the people who are working in this segment, Clean, who network all the small and medium organizations for this sector, the funding agencies like JZ, AIR, Alliance for Rural Electrification, everyone. And also, importantly, we have beneficiaries. So we are very happy to see a number of beneficiaries who have traveled from different parts of India to share their experience. So in this workshop is like we have ensured we have all these important stakeholders. Ministry at one end, facilitating organization at one end, and end user. So all the three people are together in this hall. And we have next 2 hours to discuss more about, to learn from each other and to take things forward. I am very sure this can be done with all your support. And to set the context more in detail for about this event, now I will request Nidhi Sareen, the program manager for IGN Access to Clean Energy Program. Please, thank you.
Good afternoon, all of you. I hope you managed to have a very good lunch and are all set for the very exciting discussions that we are going to have. As Yashwant was saying, we have uh, a privilege to have beneficiaries of the different DRE technologies with us today. जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए. So maybe just to formally start the event, respected Dr. Vipin, Ms. Mehta, Monish ji, very good afternoon to all of the other government and non-government and practitioner colleagues who are here. I think as Yashwant was saying, this is an event to highlight the role of decentralized renewable energy, not only achieving the net zero targets, but actually ये एक ऐसा सेक्टर है जो सीधा सीधा जाके लोगों को टच करता है, in the sense that we have the DRE technologies which can be touched and felt by the beneficiaries themselves. Many of us, I'm sure, have been attending the exhibition and the other sessions which are going on at the RE Expo to achieve 500 gigawatt and the other COP targets that we have. This session, however, attempts to bring together the role of DRE applications for touching the lives of people directly. Indian story of DRE actually began, I would say, almost a decade or several decades ago, where we started with applications on thermal and illumination purposes on biogas, biomass cook stoves, then your solar home lighting systems, solar lights. They've been there for many decades now. But now, जब इंडिया के हर घर में बिजली आ चुकी है, हमारे BPL कैटेगरी में आपको LPG के कनेक्शंस मिल चुके हैं, थोड़ा सा नैरेटिव अब चेंज हो गया है. And we are now looking at the market which is developing more towards the use of DRE technologies, particularly for increasing incomes, and how these technologies can be used to bridge the gap. We are fortunate to have the Ministry of New and Renewable Energy here today with us, and they have recently released the draft framework for DRE livelihood applications. This has been widely appreciated by the sector as a whole, and I understand there have been different feedback which the ministry has also received on how and what more suggestions can be included there. The ministry is also refining it further by factoring in the suggestions on operational aspects and implementation framework by involving different sector experts, practitioners, and the other important stakeholders there. Among the other stakeholders, GIZ is also sort of supporting the Ministry of New and Renewable Energy on aspects on how can the impact be assessed of the different DRE programs that have been running. Then what is the demand of different technologies, in what kind of clusters, which kind of areas and geographies, and also if it has to be widely accepted, क्या कुछ specifications होने चाहिए, क्या कुछ standards होने चाहिए in technologies के लिए. So what are the things that need to be done? So we are supporting the overall policy environment for that. If I talk about GIZ has been working with the ministry for over a decade now in this sector, and we've been working on different business models. The DRE can be the part of the income generation activities, not only by selling the product itself. So we know Prerna Ojas is here today with us to give an example of कि उनकी जो दीदियाँ हैं, उन दीदियों ने किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को सेल करके अपना इनकम इन्हांसमेंट किया है, और बाय सेलिंग सर्विसेज. सो वी विल हेयर फ्रॉम आर कलीग्स फ्रॉम सेल्को फाउंडेशन एंड ओडिशा इन झारखंड कि उन लोगों ने DRE के एप्लीकेशंस को सर्विस मॉडल में किस तरह से बनाया है. सो वी विल हेयर फ्रॉम देम ऑल्सो. Again, on unlocking finance, which is a very important aspect to promote the sector, GIZ has been working on different business models where we have
formal financial institutions on board now. And we will hear how Bank of India has been involved, for example, in getting the access for finance to buy the different machines that are used by the farmer producer companies. So we will hear also about that experience. And in case you want to have more details, there are certain briefs. हमने जो GIZ ने कुछ business models बनाए हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके briefs हमारे पास हैं, वो बाहर से आप ले सकते हैं. Initiatives are also underway to bring in convergence between the key ministries and department at the state level and both at the central level. So they include the different departments like SRLMs, agriculture, health, etc. Maybe जब आप लोग areas के बारे में बताएंगे तो areas किस तरह से इस चीज़ में आ रहा है तो that also you can share. Just to give an anecdote, एक एग्जाम्पल की तरह पे हमने वेस्ट बंगाल में एक फिशरी वैल्यू चेन का थोड़ा असेसमेंट किया तो हमें ये निकल के आया कि अराउंड more than 500 megawatt can be the potential for DRE integration just in this value chain and in West Bengal. This is important not only for increasing applications which can be included in the value chain, but also for carbon savings, diesel replacement, which directly feeds on to the India's NDC targets on carbon reductions and GHG reductions. I would also like to highlight the important role played by Clean Energy Network in regularly bringing together different voice of practitioners and industry people, and the key role that they've been playing in bridging the gaps on the aspects of policy, skills, knowledge sharing, awareness, and the other things that Clean is pioneering in. So it was actually a brainchild of Clean to have this kind of a event set up, and then we had discussions with MNRE and GIZ got onto the board. So thank you so much Clean for getting us all together today. आज के सेशन में we will be, as I said, we will be hearing directly from the beneficiaries who will be speaking about their experiences. We also have village level entrepreneurs who are supported by different organizations and who will share their hands-on experience on how they've been working. So I look forward to today's discussion. हम लोग इस सेशन को बहुत इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर कुछ भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें तो प्लीज़ हाथ उठाएं and we will make sure that you get in. Sir, if we may just have the ministry first and then would it be okay? Okay. Thank you so much. Thank you, Yashwin. So, yeah. Thank you, Nidhi Sirin. Thank you for this setting the contest. We'll be open to the questions when we start sharing the experience, that part. But now I invite Imani Mehta, who is part of Ministry of New and Renewable Energy and who has worked on decentralized renewable energy policies. First to give thoughts about this particular session, please. Good afternoon, everyone. Namaskar. मेरा नाम हिमानी मेहता है and I am Assistant Director in Ministry of New and Renewable Energy. So the role Ministry has already realized that the role of decentralized renewable energy and the kind of role it plays in the lives, especially in the lives of rural women, men, and how it is transforming. We'll not say transforming, but just the transition from the traditional methods to this adoption of new modern technology. So Ministry has taken the cognizance of the fact that yes, people, especially the women, are here who are embracing these technologies. And I am very delighted to see a lot of female participation over here. A lot of, I guess we have a lot of women village level entrepreneurs.
We kind of, keep on having these sessions, conferences, wherein we discuss कि कैसे हमें uplift करना चाहिए, कैसे हमें DRE को integrate करना चाहिए विलेज लेवल पे कैसे होना चाहिए ये सब. तो उसके लिए क्या होता है, पायलट प्रोजेक्ट्स हम करते हैं. तो जैसे हमें इनके रिजल्ट्स मिले हैं कि दीज पायलट्स आर एक्चुअली सक्सेसफुल. So, based on this, the ministry has come up with the Decentralized Renewable Energy Framework, wherein we are having a vision to have an end-to-end solution, wherein we can get this DRA technologies integrated at the grassroots level, and especially that is why the focus has been given on the towards the rural sector here. Right now here, I am really very delighted that we are having a sessions which is specifically dedicated to the, I guess, the women beneficiaries, other beneficiaries, and we have participation across the state. So yes, I am looking forward to that particular session, and yes, Ministry is always there to support all the intervention and to empower you throughout. Thank you. Thank you, Imani, for this. Now invite Dr. Vipin Kumar, who is also part of MNRE and works on this topic. Thank you. Good afternoon, members on the dais, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Myself, Dr. Vipin Kumar, Deputy Director from MNRE. At the very outset, I would like to thank Clean Energy Systems and GIZ for organizing this special session on decentralized renewable energy. To set the context in global context, at present the world is grappling with the problem of global warming, as you all are aware. So to reduce this problem, emissions from energy producing stations that need to be cut. For this, the country has made certain emission reduction targets in the Paris climate change. The country has set an ambitious target of achieving 500 gigawatt of renewable energy by the year 2030. For this, our ministry has launched various schemes. To name a few, PM Kusum and rooftop solar scheme. The ministry is also working on framing a scheme for decentralized renewable energy. On the decentralized renewable energy part, my colleague, Ms. Himani Mehta, has already shared a lot of things. In the subsequent sessions, we will be learning more about the the decentralized renewable energy, decentralized renewable energy steps which have been taken so far. So thank you, looking forward to a fruitful session, and we hope that we learn a lot from this workshop. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Vipin. We have invited beneficiaries. We have mostly understood from the ministry and from the top side of the intervention part. But we also have beneficiaries who have already used it and who have benefited out of it. And this forum is more to share their experience and what we can learn from them. So we have a series of people who have come across different states. We will start, we have representation from Uttar Pradesh. Prerna Oja's team has come. We have people from Odisha and Jharkhand with the facilitation of Selco Foundation. We have a team from team of beneficiaries from Himachal and Jharkhand facilitated by CEW. So we'll have a series of experience sharing things. In addition to that, we also have representation from different state. For instance, Maharashtra Energy Development Agency has come and they want to share their own experience, how they are contributing. We have people from Meghalaya
who have already started doing pilot in the particular state and what support, what type of learnings they can share with the wider audience. So this is what we are going to see in the next 1 hour or 1 hour 10 minutes time. What we can do is what we'll do is first I will invite Prerna Oja's team, Mr. Karamjit Verma, yeah, and the beneficiary also. If you are comfortable there, or you are whatever you are comfortable, you can. Yes, yes. Wherever you are comfortable, you can talk with. We'll share the. So, at the outset, I would like to thank Clean and GIZ for organizing this event and inviting us on the podium to share our views. Thank you very much. Before briefing you about Prerna Ojas, what Prerna Ojas is, I would like to tell you about a structure parallel to Panchayati Raj, which has been formed over uh, like 10 years and evolved so much that it has become a main pivot for rural economic transformation. And that structure comprises of women community institutions. Particularly, these community institutions is divided into 3 sets. It starts with SHG, self-help groups. These self-help groups further federate to form village-level organization, and 10 to 12 village-level organization federate to form a community-level institution, that is CLF, community-level federation. And in one community-level federation, around 6 to 7,000 households are organized. Women of these households represent in these community institutions, and they are actually becoming the engines of rural economic transformation. मेरे साथ and these community institutions are handholded by state SRLMs, state rural livelihood missions. So at central level, there is a program known as National Rural Livelihood Missions, and we, as a state arms of this program, we handle these community institutions. So our journey starts from the year 2018, when we got this program, 70 lakh solar energy program, to implement in Uttar Pradesh. We implemented that program and we distributed around 28 lakhs of solar lamp to school-going children. And these lamp we used to get in knockdown pieces, and our SHG दीदीज, हमारी जो गांव की महिलाएं थी, वो ये सोलर लैम्प्स असेंबल करती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी बच्चों को एट अ मार्जिनल रेट ऑफ 100 रुपीज़. दो वी आर गेटिंग दोज नॉकडाउन पीसेज एट कम्प्लीटली सब्सिडाइज रेट, बट हम बच्चों को 100 रुपये में देते थे, और वो 100 रुपये उस लैम्प की जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट होती, जितनी भी सैलरीज होती थी, उसको ट्रांसपोर्टेशन, उससे मीट आउट करते थे. ये पूरा मैसिव प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की हमारी दीदियों ने ही रन किया, ओन किया, और उस प्रोग्राम से सेविंग्स जनरेट की, जिसको लेवरेज करते हुए उन्होंने एक आइडिया फॉर्म किया कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो रूरल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए काम करेगी. एंड फ्रॉम देयर प्रेरणा ओजस प्राइवेट लिमिटेड केम इनटू पिक्चर. ओजस स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट एक्शन फॉर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी. It's a joint initiative of these cluster level federations, which are spread across 75 district of Uttar Pradesh. And the major 3 verticals on which we are working is कि we are establishing a dedicated solar shop in each block of Uttar Pradesh. We are working on to establish small manufacturing units जहाँ पे दीदियाँ आके छोटे छोटे solar products, solar home lighting systems बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, उनको उससे आमदनी हो. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि सिंस मिशन इज वर्किंग सिंस लास्ट 8 years एंड इट हैज़ फंड अराउंड 10 to 12,000 crore rupees फॉर लाइवलीहुड एक्टिविटीज़.
और गाँव में इस समय इंटरप्राइजिंग रेवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे महिलाएं अपने छोटे छोटे उद्यम इस्टेब्लिश कर रही हैं। नीड है कि हम उन उद्यम को कैसे सस्टेनेबल करें, उनको कैसे बेहतर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें। वहाँ पे एक मेजर रोल आता है डीआरई एप्लीकेशंस का। सो जो प्रेरणा ओजस है, उसका जो मेन वर्क है इज टू सप्लीमेंट दीज माइक्रो एंटरप्राइजेस, दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स विथ क्वालिटी डीआरई एप्लीकेशंस, सो दैट वो अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी, अपनी हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज़ करें। तो हमारे साथ एक ऐसी ही उद्यमी हैं, हमारे बीच में हैं, जो पिछले 4 साल से लगातार हमारे साथ काम कर रही हैं, और वो आज अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के बीच में आपको बताएंगी कि कैसे उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और आज वो कहाँ पे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तालियों के साथ हमारी दीदी, बेबी दीदी का स्वागत कीजिए। सर आपको नमस्ते, दीदी नमस्ते, सभी बहनों को और भाइयों को भी मेरा नमस्ते। मैं अपनी शुरुआत करने जा रही हूँ, कुछ शायद आप लोगों से ना समझा पाऊँ, मतलब सब इंग्लिश में बोलते हैं, मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जो 4 सालों में किया है, जो सीखा है, जो आगे ले जाना चाहती हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इन 4 सालों में मैंने पहले जब सोलर लाइट आई हमारे गांव में, सबसे पहले तो आंधी तूफान और आंधी से खम्भे गिर जाना, लाइट की दिक्कत होना, बड़ी परेशानी होती थी। तो पहले तो जो लैंप हमारे यहाँ 28,000 लैंप मतलब वितरण हुआ, बच्चों को 100-100 रुपये में हम लोगों ने विद्यालय में दिया। और उसके बाद वो पहले तो सब लोग कहते थे मुझे लैंप नहीं चाहिए, ये क्या 100 रुपये की काम करेगी, 250 की 200 की आती है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन जब उसको एक दिन एक व्यक्ति ने जलाया, 10 बच्चों ने जलाया, 10 से 20 ने जलाया, हमारा लैंप कम से कम 28 लाख लैंप हमारा वितरण हुआ। और उसका पैकअप जाना, मतलब सोलर क्या होती है, कितने घंटे चलती है, मतलब उसमें हमारा बिल तो लगना नहीं है। लेकिन जब वो 6 घंटे जली और किसी ने पहले मोड़ पर जलाकर पूरी रात जलाई, उसको क्वालिटी हो गई पता। जैसे कि अब हम लाइट जलाएंगे, पूरी रात जलाएंगे तो उसकी तो हमारी यूनिट बढ़ती ही है, बिल आना ही है, चाहे हम 2 बल्ब जलाएं या हम 10 बल्ब जलाएं। ऐसे वो सोलर का जो हम जलाएंगे उसमें हमारा कोई बिल नहीं आने वाला है। इससे मुझे लगा कि सोलर हमारे गांव में आना चाहिए। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं कि वहाँ पर डेरे डले हुए हैं और घास फूस का मकान बनाते हैं, मिट्टी का, उधर रहते हैं, उधर समस्याएं होती हैं। जैसे खेत पर जाना है तो अपनी फसल रखाने के लिए वहीं खेत पर रहते हैं। तो इसी समस्या से मैंने सोचा कि सोलर से ही जुड़ना है। तो मैंने ये सोलर लाइट बांट के फिर काम हमारा बंद हुआ, मतलब रिपेयरिंग के लिए, मतलब 4 महीने बोला कि रिपेयरिंग काम शुरू रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि आगे क्या करेंगे, लेकिन 4 महीने तक मैंने किया। उसके बाद मैंने काम रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लेके, मुझे सभी सर लोगों की वजह से मुझे ट्रेनिंग मिली, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सीख लिया। लेकिन कंटिन्यू सामान ना मिलने के कारण मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं झुक जाऊंगी और मैं टूट जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने अपना अनुभव और अपने प्रयास को जारी रखा, क्योंकि शायद सामान मिलता या ना मिलता, लेकिन मैंने उसको बैटरी बैठ जाना। तो अब गरीब है वो, 100 रुपये की लाइट है, वो भी सोचता है ग्राहक कि मैं इसको क्या करूँगा। लेकिन मैंने उसका लैंप बैटरी के कारण लैंप उसका 100 का फेंक नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसकी कीमत पता थी कि लाइट की कीमत हमारी 700 रुपये है। लेकिन मैंने उस लैंप को बैटरी को बूस्ट करने के बाद चार्जिंग पर लगाकर उस बैटरी को सही करती रही और 4 साल बराबर मैंने उसका काम, मतलब हर लाइट का किया। कभी डीसी सर्किट बदला, कभी स्विच बदला, कभी वायर बदला, धीरे धीरे ऐसे मैंने काम चालू किया। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे यहाँ सोलर लाइट का एक प्लांट आने वाला है, तब मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बैटरी जो सोलर लाइट की होती है, धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते सर लोगों के पास पहुंची। मुझे पता नहीं था कि सैलेंसर करंसर मुझे वहाँ मिलेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। तब
जब वहाँ जाके देखा मैंने तो मैंने कहा सर आप लोग तो वही हैं जिन्होंने हमें लाइट वितरण करवाई। मतलब मैं अपनी स्थिति बताती जा रही हूँ, तब मैं कैसे आई। तब वहाँ पर मैंने देखा तो मुझे सामान मिल देने के लिए सर ने पूरा प्रयास किया, मुझे सामान दिया। फिर मैंने लाइटें 4 साल के बाद भी और अभी भी मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और ये अभी जो टेरी वाला हमारा आया है 50 वाट का पैनल, सोलर चूल्हा और 3 बल्ब, वायर, ये बैटरी 12 वोल्ट की, तो ये मैंने 150 सोलर चूल्हा वितरण कर दिए हैं। मतलब कस्टमर को दे दिए हैं और उसका पैसा भी मुझे कम से कम 60,000 रुपये मिल चुका है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये काम हमारे गांव में आ रहा है तो मैं सोलर दीदी के नाम से भी पहचानी जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कहते हैं जैसे सोलर लाइट ठीक करवानी हो या सोलर प्लांट लेना हो तो कहती हैं बहनें कि सोलर वाली दीदी के पास चलते हैं। और उससे मेरी पहचान बनी कि मेरा नाम बेबी है, पति के नाम से और बहू के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन खुद के नाम से कोई नहीं। लेकिन आज मेरी खुद की भी पहचान है और मेरे बच्चे भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं वो देखिए बेबी दीदी के बच्चे जा रहे हैं। और उससे मेरे बच्चे भी जो मैंने कमाई की या बचाया, तो उससे एक माँ को क्या चाहिए होता है कि मेरे बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ें और अच्छे उज्जवल भविष्य पाएं और मेरा जैसा जीवन ना व्यतीत करें। तो इसीलिए मैंने वो बच्चे को अपना पैसा सारे बच्चों पे अंश किया है और आगे कुछ बचा के रखा है जो मैं सोलर लाइट पे खर्च करूंगी और आगे भी बढ़ना चाहूंगी, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। वेरी नाइस। बेबी दीदी आप रोना नहीं चाहिए, आपको तो इतना कॉन्फिडेंट है और बहुत कुछ किया है आप लाइफ में। या वो एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, so we started with a bank kind of thing. I mean, lights, solar light. It has made a real change at a different level, and the state government has taken it on their own, and they have established a lot of initiatives, not only in Uttar Pradesh, but also in other states also. But moving more forward, the DRE applications, it's not only solar lights, but also into different larger livelihood applications. So we will be getting some inputs from Selco facilitated certain beneficiary or two beneficiaries will be sharing their experience now. I request them to join the discussion. Ajay, you can आप थोड़ा ऐसे कर दें. I will आपको हैंड ओवर कर देता हूँ. आप लोग you can. So we have with us two beneficiaries. One is from Jharkhand and another one from Odisha, who has used the DRE technology. And we have two facilitators who will discuss and get some inputs from them. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि मेरे एंड यूज़र्स हिंदी में बोलते हैं और आई होप कि सब लोग हिंदी समझते हैं। मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगी। सबसे पहले मैं झारखंड का एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी। आई होप सभी लोग सेल्को फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। इकोसिस्टम मीन्स वन पार्ट ऑफ कोर्स एक इनोवेशंस होता है और इनोवेशन उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशंस होता है, देन डिफरेंट मॉडल्स मीन्स सोशल मॉडल। इंडिविजुअल मॉडल में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वर्क करेगा या कम्युनिटी मॉडल में। और एक पैरामीटर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है फिनेंशियल इंक्लूजन। जो भी इनोवेशंस हो रहा है उसे अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोबली हम कैसे रेप्लिकेट करें
तो फिनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अफोर्डेबल फिनेंशियल मॉडल हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है। और एक पैरामीटर्स हम लोग बिलीव करते हैं, जब भी कोई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस होता है, लोकली एक इकोसिस्टम होना चाहिए कि कौन उसे प्रोवाइड करेगा या सर्विस एंड मेंटेनेंस देगा। तो ये 4 पैरामीटर्स पे हम लोग वर्क करते हैं। और आज जो हमारे 2 एंड यूजर्स हैं, एक मिस्टर लखपत जी हैं जो एक फार्मर है और एफपीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने जो किया है या सेल्को फाउंडेशंस उनके साथ मिलकर जो किया है, मैं कहना चाहूँगी कि जो इंटरवेंशन हुआ है उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट बॉडीज़ है, नवाड के साथ हम लोग क्लोजली काम कर रहे हैं। देन जो गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म हुए हैं एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो एक इंस्टीट्यूशंस है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है। और ऑफ कोर्स सेल्को फाउंडेशन है जो एनर्जी इकोसिस्टम पे इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। एंड वन ऑफ the most important, I will say, financial institutions, Bank of India, and then other financial institutions like Jharkhand Rajya Gramin Bank, and even other financial institutions के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज लखपत जी एक मॉडल शेयर करेंगे जो डिसेंट्रलाइज रेन्यूएबल एनर्जी एफपीसी मॉडल में सेटअप हुआ है। वो एक कोल्ड स्टोरेज है, एंड देन पल्वेराइजर एंड चिप्स मेकिंग। तो एफपीसी, 1 एफपीसी के डिफरेंट फार्मर्स ने उनको मिलके सेटअप किया है, और जो मॉडल है उसमें फिनेंसिंग भी हुआ है। आई विल से सम पार्ट ऑफ कोर्स सेल्को फाउंडेशन का भी इनपुट है, एंड नवाड ऑफ कोर्स जो मार्केटिंग लाइक रूरल मार्ट सेटअप करने में उनकी कैसे प्रोडक्ट को मार्केट किया जाए, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ने उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी लखपत जी को कि वो अपनी स्टोरी बताएं, उन्होंने क्या किया है, क्या बेनिफिट हुआ है, और क्या चैलेंजेस भी फेस किए हैं, फर्दर उनका क्या प्लान है। सबको नमस्कार, जोहार। लखपत पंडित फ्रॉम गिरिडीह, न्यू प्रेस बास्केट। जो कि हमारा जो एरिया है झारखंड में, वो गिरिडीह, वो ट्रैवल बहुल एरिया है, और हम लोगों का मुख्य पैसा खेती है। तो वहाँ के लोग, जो कि हमारा जो एरिया है वह कृषि आधारित है, एवं जो कि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पर एक सीजन बरसात में केवल धान का खेती होता है, बाकी सीजन जो है सो लोग दूसरे प्रदेशों में जा कर के अपना माइग्रेट करते हैं और अपना जॉब के तलाश में दूसरे दिल्ली और महानगरों की ओर प्लान करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों ने एफपीसी जब बना नवाड के सहयोग से, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जा सकता है। तो कृषि जब हम लोग खेती बाड़ी जब किए, तो हम लोगों को जैसे उपज जो होता था, सब्जी का खेती जो होता था, तो उसको बाज़ार जैसे वहाँ से खेत से ला करके बाज़ार में ले जा कर बेचते थे, तो हर हालत में उसको शाम तक बेचना है, और नहीं तो फिर उसको फेंकना है। अगर नहीं बिका तो उसको फेंक देना है, क्योंकि वो फिर दूसरे दिन उपयोग के लिए रहता नहीं है। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने सेल्को फाउंडेशन के सहयोग से, और हमने एक बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन दिया कि हमको ये कोल्ड रूम लगाना है। तो 3 बार वहाँ पर जो बैंक थे, बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ये देने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ के जो डीडीएम नवाड के थे आशुतोष प्रकाश जी, काफ़ी उन्होंने अपना ब्रीफ किए, वहाँ पर बैंक मैनेजर को बताया कि नहीं, ये सस्टेनेबल है, इसको आप देंगे तो आप फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि कृषि में जब तक अभी तक हम लोग को कृषि यंत्रों का प्रयोग, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान का जो हम लोग प्रवास करते हैं, और उसके साथ जो आय के इनकम, जो हम लोग बराबर हमारा देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसान को आय के दोगुनी करेंगे, तो किसान का आय दोगुनी कैसे करेंगे? क्योंकि आय उनको दोगुनी करेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और एफपीसी में
जब किसान जुड़े हम लोगों से, खेती जब शुरू किए हम लोगों ने सब्जी के खेती, तो कोल्ड रूम के 10 मीट्रिक टन का कोल्ड रूम लगाए हैं। 14.5 लाख उसमें लागत है, 1,53,000 हम लोगों ने दिया है, और 3,75,000 रुपया बैंक लोन है, और ये 875 ये सेल्को फाउंडेशन का अनुदान है। तो इस तरह से आज अभी जो दिसंबर में लगा था हम लोगों ने, उसमें मार्च के अंत में आलू का रखा। आलू जब रखा उस समय हमारा आलू का कॉस्ट 10 रुपये के.जी, यानी 80 क्विंटल हम लोगों ने रखा। उसमें से 80,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, और ये मई से जून तक ये जो आलू का रेट था वो 16 रुपये के.जी हो गया। तो इस तरह से जब हम बाज़ार में लेकर गए तो 1.5 गुना से ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिला। तो इस तरह से जो किसान, क्योंकि हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, उपजा सकते हैं, बेचने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था। जब आप इसको स्टे करके रखे, कोल्ड रूम में रखे, तो हम लोगों को 1.5 गुना इनकम बढ़ा। इसी तरह से अभी जैसे बता रहे थे कि हम लोगों ने आलू चिप्स बनाए, तो आलू चिप्स का जैसे उसका स्टोर किए, तो हम लोग आलू चिप्स बनाए 200 रुपये किलो। फिर उसको चिप्स बना करके हम लोगों ने ओपन मार्केट में बेचे, तो 200 रुपये किलो हम लोगों को बेचे, तो उससे भी 1.5 लाख रुपये हम लोगों को इनकम जनरेट हुआ। इसके साथ जैसे हम लोग को यहाँ पर फर्टिलाइजर लगाए हैं, गेहूँ होता था बहुत, तो आजकल गांव में भी लोगों ये जो पहले चलता था आटा का जो चक्की हम लोग बोलते हैं जाता वाला, वो भी लगता है कि गांव में नहीं के बराबर मिलता है, जिसे में लोग बाजार से लोग आटा वाला खरीदते हैं। तो हम लोगों ने वो जब फर्टिलाइजर लगाया, तो वो उससे क्या होता है कि गाँव के लोग आते हैं मेरे पास, और मात्र 3 से 4 रुपये के.जी हम लोग लेते हैं और पिसाई करते हैं, और बहुत अच्छा इनकम होता है हम लोगों का। पर डे 1,000 रुपया, 1,200 रुपया इस तरह से करते हैं, और बाजार में हम लोग जब उसको बेचते हैं तो 25 से 30 रुपया किलो हम लोग को उससे एडिशनली मिल जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह से पूरे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हुआ, उसी तरह से अभी सेल्को फाउंडेशन की ओर से हम लोगों ने ये जैसे मसाला वाला हल्दी का है, हम लोगों ने ये पिसाई कर रहे हैं, और उससे भी हम लोग जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसमें से 25 से 30 हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो काम करती है, ताकि उनको भी हम लोग पर डे 150 से 2 रुपये हम लोग उनको दे रहे हैं। इस तरह से आज सोलर का जिस तरह से उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ और बढ़ रहा है, क्योंकि झारखंड जैसे प्रदेशों में बिजली का आपूर्ति बहुत कम रहता है, इसे में सोलर आधारित, क्योंकि हमको जो लागत है वो कम करना है। तो जब तक हमको ये सोलर आधारित चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो किसान का डेवलप संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह से जो भी सोलर आधारित चीज़ें हैं हमको किसानों को वहाँ मिला जाए, मिलते रहे। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि इस तरह से जो सब्सिडी, जैसे हम प्रत्येक महीना 10,000 रुपया EMI देते हैं बैंक को, तो 6 महीना का ये हम लोगों का दिया गया था, लेकिन करीब इसको और क्योंकि 54 महीना देना है EMI, 54 महीना देना है, तो थोड़ा सा EMI ज़्यादा होता है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इसको और EMI थोड़ा सा जो सब्सिडी है कम किया जाए और बढ़ाया जाए, और EMI जो है सो जो 54 महीना है उसको ज़्यादा किया जाए। इस तरह से इसके अलावा जो हमारा जो क्षेत्र है, किसानों की जो पलायन है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने अभी 10 एकड़ में हम लोगों ने सब्जी खेती के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर सत्तू का बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया है। जैसे चना होता है गांव में, तो उसको ला करके उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके सत्तू बनाते हैं, जो 100 से 120 रुपये के.जी हम लोग उसको बिक्री करते हैं। इसमें भी कंपनी को बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने, और जैसे हम लोग के एरिया में पत्तल मिलता है, उसको स्टोर करके और गांव में पत्तल बना करके, और मशीन एक है उसमें ये करके हम लोग बेच रहे हैं, ताकि उनको भी इनकम हम लोग जनरेट करते हैं। इस तरह से हमारा एपीसी आज करीब लगभग 54 लाख रुपया का, अभी हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, 54 लाख रुपया से ज़्यादा का बिजनेस किया, और करीब 8 लाख से ज़्यादा इनकम हुआ। अभी हम पर महीना
प्रत्येक महीना ये 40,000 रुपया EMI दे रहे हैं बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया प्लस ग्रामीण बैंक। इस तरह से हमारा जो है सो FPC में काम चल रहा है और आने वाला समय में सेल्को फाउंडेशन, रुद्रा फाउंडेशन और जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर, इस तरह से हमारा झारखंड में प्रमोट किया जाए, लोगों को लाया जाए, तो वहाँ का FPC आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद लखपति। Just I want to say this was a completely innovative convergence model. NABARD and then one more NGO, Rudra Foundation, financial institutions, and Selco Foundation played an important role for this model. And we are also trying to involve the district administration. Right now, we have a plan to do a blanketing approach in the same district, Giridih district, because that district has been declared as a solar district or clean energy, green energy district by the Jharkhand government. So completely a convergence model, I will say, along with the financial institutions. And the next, पिंकी जी हैं, ये OLM ओडिशा लाइवलीहुड मिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत सारे SHGs, फेडरेशंस की दीदियों के साथ काम कर रही हैं। तो अगर मैं और ये कालाहांडी को बिलोंग करती हैं, तो अगर इस मॉडल में भी जो उड़ीसा में हुआ है, ये भी एक कम्प्लीटली कन्वर्जेंस है, क्योंकि OLM ओडिशा लाइवलीहुड मिशन के द्वारा बनाया हुआ जो फॉर्म हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, फेडरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके साथ सेल्को फाउंडेशन जुड़कर एक मॉडल क्रिएट किया है लाइवलीहुड का, और कम्प्लीटली अ कन्वर्जेंस मॉडल। सो मैं मेरी कलीग स्वागतिका है, वो थोड़ा ओवरव्यू एंड कॉन्टेक्स्ट देंगी, तब पिंकी जी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू श्वेता जी। मेरा नाम स्वागतिका है, मैं सेल्को फाउंडेशन से आई हूँ, ओडिशा कलाहांडी में। एक्चुअली कलाहांडी ऐसे एरिया है, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग को ट्राइबल हैं, तो लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर पे वो निर्भर करते हैं। उसके साथ साथ ज़्यादातर लोग माइग्रेंट भी जाते हैं, और नहीं तो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको बेच के उनका लाइवलीहुड चला देते हैं। तो अभी हम लोग ओडिशा लाइवलीहुड मिशन के साथ पार्टनरशिप करके दीदी लोग का कैसे काम करेंगे, उनका इनकम कैसे जनरेट होगा, उसी हिसाब से हमारे पास एक दीदी है, वो ने SHG लोगों को, जो दीदी है उन माँ को कैसे अवेयरनेस की है सोलार के बारे में। वो एक प्रोसेसिंग यूनिटी बैठाई है उनके गांव में, तो वो बताएंगे उसका एक्सपीरियंस कैसा है सोलार के बारे में। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पिंकी प्रधान है और मैं कलाहांडी ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। मैं ओडिशा लाइवलीहुड मिशन में एज ए मास्टर बुक कीपर के काम करती हूँ। मेरा जो गांव है कलाहांडी है, वो बहुत ही रिमोट एरिया है, जहाँ पे भी बिजली नहीं आती है। अगर एक दिन आता है तो 2 दिन 3 दिन तक नहीं आता है। फिर हम क्या किए कि हमारा जो ब्लॉक स्टाफ है सेल्को फाउंडेशन, वहाँ पर जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए, और हमारे जितने भी मास्टर बुक कीपर हैं हमारे ब्लॉक में, तो हम सबको लेके एक मीटिंग कराए। फिर हम आके हमारे गांव में सेल्को फाउंडेशन के अवेयरनेस के मीटिंग की। फिर हमने क्या किया कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हम आके हम उन महिलाओं के एक मीटिंग कराए कि सेल्को फाउंडेशन ये है, सोलर सिस्टम है, जहाँ के भी हमें जितने भी काम करेंगे हमें बिल नहीं भरना पड़ेगा। फिर क्या किया कि हमने एक टर्मरिक का बिजनेस किया। टर्मरिक का बिजनेस किया क्योंकि हमारे जो कलाहांडी है वहाँ पे हल्दी ज़्यादा उगता है, जो कि हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाते थे, और वो मिडिल मैन आके खरीद के ले जाता था। फिर हमने सेल्को फाउंडेशन के साथ बात किए और एक हल्दी यूनिट क्रिएट किए, और वहाँ पे हम अभी हल्दी प्रोसेसिंग करते हैं। हल्दी प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होता है कि हम दोनों चीज़ करते हैं, एक चासी से खरीद के लाते हैं और हम उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं पैकेटिंग करके, और दूसरा करते हैं कि जो चासी हमसे पिसवाता है, जो हमारे मिल में पिसवाने आता है, उससे हम 10 रुपया चार्जेस लेते हैं पर केजी। तो ऐसे करके अभी हमारा बिजनेस है। जो हमारा यूनिट कास्ट है वो 4,50,000 का था, जो कि हम फेडरेशन से 1 लाख रुपए लोन लिए
और 3,50,000 रुपये हमें सेल्को फाउंडेशन ने हेल्प किए हैं। तो अभी हमारा क्या हुआ कि अभी हम पर महीना 45 से 50,000 रुपये इनकम करते हैं, तो सारा खर्चा जाके हमें अभी 25,000 रुपया इनकम होता है। और हमने जो फेडरेशन से 1 लाख रुपया लोन लिया है वो हम EMI के तौर पे 5,000 रुपया वो फेडरेशन को देते हैं, और बाकी जो 20,000 का हमें प्रॉफिट होता है वो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और जो भी हमें महिला की ज़रूरत होती है पैसे, वो हम उनके घर पे लगाते हैं या हम खुद ले जाते हैं वो पैसे। तो ऐसे करके अभी हमारा इनकम जनरेटर बहुत बढ़ गया है। और अभी हमारे कलाहंडी में या हमारे ब्लॉक में जितने भी SHG ग्रुप हैं वो लोग हमें देख के बहुत इंस्पायर हुए हैं, और फिर जब हमारा काम देखे तो फिर उन्होंने बोला कि हम भी एक कर सकते हैं, हम भी करेंगे। तो अभी फिर हमने वो लोग हमसे कनेक्ट किए, फिर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ के सेल्को फाइनेंस के साथ बात करके अभी हम पॉप राइस यूनिट करते हैं और एक गारमेंट यूनिट भी करते हैं जो कि सेल्को फाउंडेशन की तरफ से करते हैं। तो अभी वो लोग भी पॉप राइस में जो करते हैं वो भी अभी बहुत प्रॉफिट में हैं। तो थैंक यू सेल्को फाउंडेशन हमें इतना इनकम जनरेट करने के लिए। This was also completely a convergence model, I will say, because the institution has been formed by the OLM, Odisha Livelihood Mission, and Selco Foundation as a facilitator, helped the SHG members along with the OLM to create awareness and, how to set up the business model, what would be the financial model. So that was the overall model. So we are looking forward to work across Odisha with the OLM to replicate this model. Okay, thank you. Thank you for sharing this. Short or long? Yeah, please. One question. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दोनों प्रेजेंटेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि रूरल सेगमेंट को किस तरह प्रमोट किया है, उसके लिए बहुत बहुत। आई एम एच कुमार फ्रॉम CST वे सोलर प्रमोट इन राजस्थान। इसी तरह की जो प्रक्रिया हमारे राजस्थान में है डूंगरपुर के अंदर, जो FP के रूप में, जिसमें 55 महिला हैं और वो सारी महिला के द्वारा ऑर्गेनाइज होती है और उनका अच्छा आउटपुट है। मैं बहुत बहुत हृदय से दवा। मेरा एक सजेशन है, क्योंकि नाबार्ड की एक स्कीम है जो है FPO है, वाई नॉट ए नाबार्ड स्टार्ट द रूरल टेक्नोलॉजी कम प्रोडक्शन सेंटर, क्योंकि ये रूरल एरिया की एमिनिटी है। क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी जब होगी, जब उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा, जब उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, तो माय पॉइंट इज रूरल टेक्नोलॉजी कम प्रोडक्शन सेंटर हो और नाबार्ड के थ्रू एक इनिशिएट किया जाए, जिससे कि जो रूरल एरिया की महिला हैं और रूरल का जो सेगमेंट वो एक्सेस टू एनर्जी होगा, एनर्जीज होगा, एनर्जी कंट्री बनेगा, एनर्जी महिला बनेंगे, एनर्जी देश बनेगा। Thank you for that suggestion. Thank you, Selco team and Pinky Ben and Lakpat Pai. Okay, I will definitely. I mean, the thing is, why we were sharing this experience was whenever we discuss about the DRE policy for livelihood application with the Ministry and of New and MNRE, they always ask about what are the examples, how it works, whether convergence really happen in field like that. So we have experience not only at Light, there is experience of 4 lakh for the processing, turmeric processing, 14 lakhs for cold storage. Things are happening and a lot of efforts have been put by different organizations and they have demonstrated the success part also. But now it is ready for scaling up, and with the support from the ministry and OLM and all, it will be taken up at a larger level. Now I invite CEW team and their beneficiaries. They have 3 beneficiaries to share their experience and 2 people to facilitate. Yeah, please.
Thank you so much. I would like to start with thanking Clean NGIZ for giving us this opportunity. So I am Divya. I am working as a program associate at the Council on Energy, Environment and Water. And today I'm joined by my colleague Mosmi Kabiraj, who is looking at the gender integration within the program. So Powering Livelihoods is a collaboration, it's a joint event, initiative between CEW and Will Grow. We aim to mainstream clean energy livelihoods in rural areas, and we are doing this by supporting the enterprises which are manufacturing these DRE technologies through technical as well as financial support. Today we have two of our end users, Naren Par Kaur who is with Monica ji, who supports her in her enterprise, and we have Basanti ji from Jharkhand. So I'll just give a brief introduction about our end users before starting the discussion with them. So नरेंद्र पाल जी हिमाचल प्रदेश से हैं, पौंटा साहिब से. वो अपनी एक कंपनी चलाती हैं निनी हर्बल के नाम से. वो अभी अपनी इस कंपनी में मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हैं. उनके साथ मोनिका जी भी काम करती हैं जो कि सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हैं. हमारे साथ बसंती जी हैं जो हज़ारीबाग झारखंड से हैं, जो सोलर बेस्ड हाइड्रोफोनिक वाटर सिस्टम का यूज़ कर रही हैं. और आज ये लोग हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह इस टेक्नोलॉजी ने इनको मदद करी है इनके काम में. सो नरेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं. पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि किस तरह आपने निनी हर्बल बनाया, और फिर थोड़ा सा आप अपना मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर के बारे में बताइए. आपको किस तरह पता चला, क्या क्या दिक्कतें आती थी पहले जब आप काम करते थे प्रोसेसिंग रिलेटेड. सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार, और मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू आपको यहाँ बुलाने के लिए हमें. और मेरा नाम नरेंद्र पाल कौर है. मैं हिमाचल से हूँ, ब्लॉक पौंटा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से. हमारा निनी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम 7 महिलाएं काम करती हैं, जिसमें हम बहुत सारे 60-70 हम प्रोडक्ट बना रहे हैं. जैसे कि हम पहले हर्बल टी, साबुन, शैम्पू और फेस पैक वगैरह बनाते थे. तो उसके बाद हमें पता चला जो धर्मवीर जी की फूड प्रोसेसिंग मशीन है, उस मशीन से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, क्रश किया जा सकता है, उसमें मैश किया जा सकता है. तो फिर हमें नबार्ड के सर थे, उन्होंने हमें बताया कि मैडम ऐसे ऐसे करके वहाँ यमुनानगर में धामला में एक मशीन है, तो आप उसका पता करें. जैसे हमारा जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, वो वन प्रोडक्ट के नाम, जैसे लहसुन अदरक के वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. जैसे अदरक का हमने अचार बनाना होता, हमें छिलना पड़ता था अदरक, जिसमें हमारे नाखून और टूट जाते थे, हमारे हाथ कट जाते थे. तो फिर जब हम वहाँ मशीन देखने गए, तो जब हमने देखा तो हमें लगा कि ये मशीन हम आज से 10 साल पहले क्यों नहीं हमने खरीदी है. तो उस मशीन में हम अदरक डालते हैं, अदरक उसमें छीला जाता है, उसको निकाल के फिर हम अदरक उसको धो के दोबारा से फिर उसमें हम क्रश करते हैं, उसका अचार बनाना या उसका पाउडर बनाना. ऐसे ही हल्दी को हम उसमें उबालते हैं, उबालने के बाद उसमें क्रश करते हैं. जो काम हमारा 10 महिलाएं करती थी पूरा दिन में, मान लो कि 1 क्विंटल अदरक 100 किलो अदरक छिल नहीं पाते थे, तो वो 2 महिलाएं उस मशीन में 2 घंटे में सारा काम तमाम कर देती है. फिर हमें सुखाने में प्रॉब्लम आ रही थी, फिर हम खुद के सोलर ड्रायर बनाने शुरू कर दिए. जैसे हम मार्केट में जैसे पता करते थे ऑनलाइन सोलर ड्रायर 1 लाख 1.5 लाख से हमें कोई कम नहीं मिलता था, इसलिए हम स्टील के लकड़ी के सोलर ड्रायर भी बनाने शुरू कर दिए, जिससे हमें उसमें जो भी मटीरियल अदरक क्रश किया, हल्दी क्रश की, सुखाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आ रही. तो ऐसे ही जो लहसुन होता है, लहसुन हमारे वहाँ पे बहुत होता है, 30-40 रुपए किलो वाला लहसुन जो है, वो हम उस मशीन में ब्लैक गार्लिक बना रहे हैं. आपने ब्लैक गार्लिक का सुना होगा सबने, जो अमेजोन वगैरह पर जाएंगे सर्च मारेंगे तो वही 3-4 हज़ार रुपये केजी है. जो हम 30-40 रुपए किलो वाला लहसुन है, वो हम 3-4 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं. ऐसे ही उस मशीन में जैसे हम आम डालते, कच्चा आम होता है, उस आम को उबाल के उसका आम पन्ना, आम पापड़, पक्के आम जैसे होते हैं उनका हमें जूस, उसका स्क्वैश उसमें हम बनाते हैं. जैसे हमने कोई भी
शुगर केन, एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल का जैम, कुछ भी बनाना होता है वो मशीन ऐसी है कि उस मशीन में आप 100 क्या मैं बोलती 500 प्रोडक्ट उसमें हम बना सकते हैं। लहसुन का जैसे हमने उसका बनाना मूली का हम नमक बनाते हैं, मूली का नमक हमारा निन्नी के नाम से फेमस है, तो मूली उसमें डालते हैं, हम क्रश करते हैं, सोलर ड्रायर में सुखाते हैं। ऐसे ही हम उसमें बहुत कुछ बना रहे हैं। हमारे वहाँ पे ग्लोई बहुत होती है, ग्लोई अनलिमिटेड होती है, तो ग्लोई का हम अर्क बना रहे हैं। ऐसे ही ग्लोई का अर्क हो गया, गुलाब जल, तुलसी अर्क। तो ऐसे ही करते करते हमारी अब इतनी पहचान हो गई निन्नी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कि जैसे हमारे डीसी सर थे, हमारे मुख्यमंत्री जी से हमें था कि हम मुख्यमंत्री से कैसे मिले, तो इस मशीन के कारण हमारी इतनी पहचान हो गई है। हमारे गवर्नर सर जैसे हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारे वहाँ मंत्री है, तो मतलब डीसी सर मतलब घर तक आते देखने के लिए कि वाह वाकई ही कोई ग्रुप काम कर रहा है। तो वाकई मेरी बहनों से सबसे मैं ये ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई बेरोजगार है निराश मत होएं, वो मशीन लाएं और लाखों रुपए कमाएं। जब हम 100 रुपए कमा रहे थे, आज हमसे लाखों रुपए कमा रहे हैं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र जी। आप थोड़ा और बता सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग कैसे मिली, किस तरह से ये मशीन को आपने चलाना सीखा? मैम सबसे पहले तो मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो सब पता ही होता है कि जैसे मान लो तुलसी अर्क है उसके क्या फ़ायदे हैं, गुलाब के क्या फ़ायदे हैं, जैसे मूली से क्या बन सकता है। तो उसके बाद जब मशीन लेने गए तो धर्मवीर जी ने बहुत कुछ इतना कुछ बता दिया कि मशीन के बारे में कि मैं लेने को मजबूर होगी कि वाकई मशीन लेके घर जाना ही जाना है। तो ऐसे उसके बाद फिर डीआईसी की तरफ से हमें ट्रेनिंगें बहुत मिली, एनआरएलएम की तरफ से, डीआरडी की तरफ से हो गया, ब्लॉक की तरफ से। अब तो कोई ट्रेनिंगों की कमी नहीं है, जितनी मर्जी करते रहो। आजकल हम इसी मशीन के ऑनलाइन डेमो भी दे रहे हैं, महिलाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं कि सीखो और आप भी अपना रोजगार जो है अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करो। धन्यवाद नरेंद्र जी। मोनिका जी, आपने सोलर ड्रायर उन्होंने किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा है, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं सोलर ड्रायर यूज़ करने का? मैडम हमने सोलर ड्रायर खुद बनाया है। खुद बनाया है इन्होंने सोलर ड्रायर? थैंक यू सो मच। जी बताइए प्लीज़। मैम सोलर ड्रायर से हमें जो हेल्प मिली है, जैसे कि हमारी सब्जियां वगैरह थी, हमें उन्हें सुखाने में बहुत मदद मिली है। हमारे वहाँ जो गिलोय बेल मैम ने बताया है, वो उसका हम पाउडर उसे सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, जो कि बीमारी में बहुत काम आता है। तो जैसे हमारे वहाँ पे एप्पल बहुत होता है, तो एप्पल चिप्स बना रहे हैं हम उसका। तो जैसे अंगूर हो गया, अंगूर का किशमिश बना लिया, सुखा के बना लिया, तो बहुत कुछ उस ड्रायर में। तो मैम नबार्ड की तरफ से हमें ऑर्डर भी आ रहे हैं सोलर ड्रायर के, हम सोलर ड्रायर बेच भी रहे हैं निन्नी सोलर ड्रायर के नाम से। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद नरेंद्र जी। बसंती जी, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे सोलर बेस्ड हाइड्रोफोनिक पॉडर सिस्टम एक नया तरीके का सिस्टम है, तो आप बताएंगे आपको कैसे पता चला, किस तरह आप उसका आज इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ उपस्थित सभी का मेरा नमस्कार। मैं हजारीबाग ज़िले से झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक ग्रामीण महिलाओं के साथ कितना दुखद होता है घर से बाहर निकलना। वो मैं घर से बाहर निकल के आज मैं यहाँ तक आई हूँ, उसके बारे में हम बताते हुए हम हाइड्रोफोनिक के बारे में लास्ट में इसकी जानकारी देंगे कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं एक गृहिणी थी। 2018 में हम जेएसएलपीएस के माध्यम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, उसमें मैं समूह की बुक कीपर थी। उसके बाद मैं गांव की एक्टिव वुमेन बनी। एक्टिव वुमेन बनने के बाद मैं 50 समूह की देख रेख करती थी। 2-3 साल तक मैं देखी। जब कोविड का समय आया, उसके बाद हम लोग के झारखंड से बहुत को ऐसे माइग्रेंट लेबर है जो बाहर आके काम करते हैं, तो उसमें हम लोग का एक केडर का चयन हुआ। उसमें मैं एक बीआरपी एसटी के रूप में कार्यरत हूँ अभी। उसी तरह जब हम लोग को आजीविका से जोड़ना पड़ा, बहुत सारे ऐसे थे जो बाहर में फंस गए माइग्रेंट लेबर, उनके परिवार में खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उनको हेल्प चाहिए था, तो हम लोग एसएचजी के माध्यम से उन लोग को खाना का भी ज़रूरतमंद जो थे, जब तक कोविड था तब तक हम लोग उन लोग को उपलब्ध कराएं।
उसके बाद हम लोग एक पीसी का गठन किए। उसमें महिलाओं का ही एक डेयरी लेकर के है। जैसे कि हम लोग का गांव में अधिकतर गाय पालन होता है, तो हम लोग सोचे कि हम महिलाएं मिलके एक गाय पालन करते हैं तो उसका एक अलग सा रूप दें। तो उसी में से एक पीसी का गठन किए हैं, जिसमें हम लोग 370 महिलाएं अभी तक जुड़ चुके हैं। उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो हम लोग का गाय के खिलाने का दाना चोकर होता था, वो 16 से 17 किलोमीटर दूर जाके लाया जाता था। उसको हम लोग खुद से दुकान खोल के अपना महिलाओं को घर के अगल बगल में ही दे रहे हैं। और दुकान से अगर दूरी पे है तो उसका गांव में ही एक एक दुकान हर एक गांव में हम लोग कर दे रहे हैं, ताकि दीदी लोग खुद से जा कर के अपना गाय के लिए चारा ला सकती है। तो उसी में से हम लोग को पता चला, एक ग्रैंड थाउजेंड करके एक हम लोग का संस्था है, वो हमारे पीसी का देखरेख करते हैं। तो उसी में पता चला कि एक ऐसा हाइड्रोफोनिक नाम करके है, जो हम घर पे ही बिना ज़मीन का, बिना मिट्टी का, हम लोग घर पे ही सालों भर गाय को हरा चारा दे सकते हैं। तो हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन उन्हीं के माध्यम से लाया गया। मैं एपीसी की अध्यक्ष हूँ। तो बताया गया कि ये किनके घर पे लगाया जाए जो अच्छे तरह से इसका देखभाल करके और इसका प्रचार प्रसार कर सके। तो वो हमारे घर पे ही लगाया गया और हमको प्रशिक्षण भी दिलाया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से जब वो देखा गया तो पूरा गांव वाला देख के अचंभित रह गया कि ये कैसा चीज़ है जो बिना मिट्टी का हम इसको उगा के सालों भर गाय को खिला सकते हैं। और इसमें बहुत सारा विटामिन है। उससे जो उग रहा है, अगर हम गेहूँ उगाते तो उसका पत्ता इतना मीठापन है कि उससे गाय को खिलाने से उसका दूध भी बढ़ रहा है, उसका जड़ भी हमको जड़ भी खिला रहे हैं गाय को, उसका बीज भी खिला रहे हैं और उसका हरा चारा, उसका पत्ता भी खिला रहे हैं। तो उससे हमारे गाय का 1 से 2 लीटर का दूध बढ़ गया। और अभी तो बहुत सारा है कि ऐसे देखने में भी इतना सुंदर लगता है कि देख के लोग कहते हैं कि जिनका घर में है कि हम भी इसको लगाएंगे अपना घर में। और उसको खिलाने से मैं खुद से अपना घर पे उसका उपयोग की, तो गाय का दूध बढ़ गया, उसका सेहत भी बहुत अच्छा रहा और एक प्लांट शो की तरह बहुत अच्छा से ये अपना घर पे मैं कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है नरेंद्र जी से और आपसे भी मोनिका जी। आपने बताया कि आपने सोलर ड्रायर्स घर पर ही बनाए हैं, तो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन आया और किसने आपको ये ट्रेनिंग दी? आपने किसकी हेल्प से ये सब सीखा? आप अगर वो बता पाएं। मैम, अगर किसी के अंदर कुछ जज्बा कुछ करने का हो तो मंजिलें खुद खुद बन जाती है। तो हम मेरे अंदर वो था कुछ करने का, कुछ मतलब पाने का, कुछ नया करने का। तो हमारे भाई सब यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे इधर बैठे हैं, तो उनका मेन रहता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो बहन जी, ऐसे नहीं अब ऐसे करो। जब हम बना रहे थे तो मशीन से, जैसे मान लो मैंने आंवले का सीजन 2-3 रुपए किलो आंवला है, तो आंवला 2-3 रुपए किलो लिया, हमने उसको क्रश किया। क्रश करने के बाद उसको सुखा के हमें हेयर मेहंदी बनाती हूँ, मैं हेयर मेहंदी, हेयर पाउडर बनाती हूँ। तो सुखाते थे तो प्रॉब्लम आती थी मेरी, एक तो बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और हिमाचल में, तो सुखाने में प्रॉब्लम आती थी। तो फिर जैसे थे इलेक्ट्रिकल ड्रायर में सुखाते तो उसमें वो सब कुछ खत्म हो जाता था सुखाने से। फिर हम सोच रहे कुछ नया करें, कुछ क्या करें। फिर हमने ऑनलाइन पता करवाया, कोई 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 4 लाख का, इतना हम नहीं खरीद सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं कुछ करते हैं, अपना ही बनाते हैं। पहले छोटे लकड़ी के बनाए मॉडल, उसके बाद हमने स्टील के बनाने शुरू कर दिए। अब नबार्ड वालों ने उन्होंने उठा 4-5 तो ले गए वो सोलर ड्रायर, नबार्ड वाले सर जो थे। अभी और ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सोलर ड्रायर। और हम उसमें सुखा रहे हैं। जैसे हमें करी पत्ता का पाउडर बनाते हैं, करी पत्ता वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका पाउडर जो अगर धूप है तेज़ तो 1 घंटे में पत्ता बिल्कुल सूख जाता है और वही कलर रहता है, वही खुशबू, ऐसे लगता है कि जैसे अभी ताज़ा फ्रेश पेड़ से तोड़ के रखा हो। तो इसलिए
वो आइडिया हमारे दिमाग में आया है, तो आइडिया हमारा सक्सेसफुल दिस हुआ। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये अपने मॉडल्स हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें दिखाइए आपने कैसे बनाया है। मे बी वो फोटोग्राफ्स दिखाइए, ओके आपको वो मैम, वीडियोस दिखाइए। ओके मैम, जरूर, थैंक यू मैम। आप किसी को कोई सवाल है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो महिलाओं की बात की, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जयपुर में था नाबार्ड के प्रोग्राम में, क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर्स फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम के तहत कोई भी महिला 10 लाख रुपए तक का विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन ले सकती है, जिसपे 35% की सब्सिडी मिलती है, और उसमें सोलर का इनपुट भी है। सोलर ड्राई से आप उसको किसी भी चीज़ को, ड्राई फ्रूट को, जैसे आंवला कैंडी है, अदरक है, इसको आप प्रोसेसिंग में ला सकते हैं, और एक हम इंटरप्राइज खोल सकते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की स्कीम है, महिला बहुत बड़ी सहभागिता बनेगी देश के विकास के अंदर। सर, जब तक आपकी बात की, जब तक हमें पता नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है, जब हमें पता चल गया कि सरकार कुछ है, अगर हम सर एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार हमारे साथ 10 नहीं 100 कदम बढ़ाएगी। तो कहीं भी जाके आप ब्लॉक में चले जाइए, अपने DIC ऑफिस में चले जाइए, NRLM में चले जाओ, आप DRD ऑफिस में चले जाओ, और वहाँ पे जाके बोलो कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। सरकार मना नहीं करती, महिलाओं को काम करने वाला चाहिए। ये नहीं कि सरकार से पैसा लो और खा लो, सर ऐसा नहीं है। आप काम करके दिखाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है। Okay, thank you. धन्यवाद नरेंद्र जी, धन्यवाद बसंती जी, धन्यवाद मोनिका जी। ये लोग रिमोट लोकेशन से ट्रैवल करके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए, हम पे आपने इतना ट्रस्ट किया। ये तो कुछ स्टोरीज है, एंड एट पावरिंग लाइवलीहुड्स वी आर लुकिंग एट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट असेसमेंट ऑल्सो to gather evidence on how these technologies are working, how they are leading to increase in income, reduction in drudgery, and carbon emission mitigation. So I think it's a wonderful time ahead for this space. Thank you so much. Thank you very much. Dhanyavad. The program Powering Livelihood is more of empowering beneficiaries, particularly women beneficiaries. That's very interesting to learn. Next, I will request two colleagues from Meghalaya. I was just searching. Please join from Meghalaya State Rural Livelihood Mission to share their experience. A very good afternoon. First of all, I would like to thank Clean India and GIZ for facilitating us to be here in this moment. And I am Shadlang Lingdo. I'm the Chief Operating Officer, Meghalaya State Rural Livelihood Society. It is an agency implementing national rural livelihood in the state of Meghalaya. Meghalaya is a temperate climate zone, and we receive maximum of 12,000 mm rainfall in a year. And we have very good products. We call it Lakadong turmeric, one of the famous turmeric having 8 to 12 curcumin contents. However, why I have to say this, although we have this world famous Lakadong turmeric, but most of our farmers, they lack access to they have to dry sun their spices. When they dry sun their spices, most of the time they have difficulty in maintaining the hygienic and dust content of the turmeric. So therefore, they are not able to sell in a premium price at the market rate. So we are very happy to associate ourselves with Clean India when they come to us in the year 2019. When they come to us, they said, we can help you in this area where we can introduce some of the technology where common farmers can take this technology and can access to solar dryer. So we have here with us our representative from the community
whom we have already initiated 2 pilot projects through Clean India. Also in renewable energy, MSLS is also working with Selco Foundation. We have been work in aspect of livestock, where we promote mini hatchery. Most of the remote area in Meghalaya, we are meat eaters. So therefore, we consume lot of poultry and pigs. So when we introduce this mini hatchery, it really benefits the member of SDGs who can now start their own hatchery at their own backyard and then produce the old chicks in 21 days through solar energy. So I will not speak much, but I will ask my community representative. Here, here we have a village representative from Garo communities. He will tell you what is the potential of renewable energies that we can undertake in our states. Yeah. Mumin, please. Thank you, sir. By the way, my name is Damiash H. Maman from Garo Hills, Meghalaya. And first of all, I would like to thank MSLS sir, so that sorry. Thank you, Clean India organization, to bring me up here to stand with you all. Thank you. And I'm come here as a village executive member. Well, in Garo Hills, Clean India initiated this 2 dairy projects, this biomass dryer and solar farm. Water solar farm, yes. These 2 projects is initiated. In this project, we got very in I think he a little bit nervous. It's first time in a public meeting like this. Actually, there are 3 communities in Meghalaya. We have the Jaintias, the Khasis, and the Garos. We select Garo Hills region because the region is a little bit backward and have lots of resources. Although it's backward, but there are lots of forest resources. And the sunshine level in this particular areas, we have around 5 to 6 districts. Very good sunshine because it's border to Bangladesh. So therefore, we select this area. We thought that if we invest in this area, it will really benefit the communities because there are so many products. We have from best cashew nuts, we have bananas, we have tezpata and black pepper. So it grows lots of these spices and fruits in this particular area. So therefore, we thought that by introducing the pilot project on biomass dryer, solar dryer, it will really impact on the life of those farmers who sell their banana now. One bunch of banana they sell to traders, just 50 rupees a bunch. So we thought that if we introduce the value change of dryers here, they can make it into banana chips, and then they can sell it at a very premium price.
So these are the thought of why we want to start this solar intervention in this particular areas. So if you have anything to say. Yeah. So that's all from our side. Thank you. Thank you. So this one was Meghalaya State. They were trying to do some pilots when most of the things were more focused on Assam. Meghalaya was coming forward and they were taking their own initiatives to take up DRE to the village. So they have done demand assessment for before I will say MNRE want them to do. They have started in 2-3 districts on their own to understand what is the potential demand for different applications. So they have done a pilot and that was supported by a clean team. And then some of them has become action. So they have started the pilot also in the field. So they are starting, and hopefully the next time we'll have more. They will have more people to share their experience and the challenges, learnings from the state. Thank you, sir. Thank you. No issue. Okay. Actually, this was the plan for the sharing of experience part. But what happened is today we have a lot of people who want to share their experience. And we have people from Maharashtra Energy Development Agency. Actually, we have 3 senior people, Mr. Suraj Bakmar, Additional Director General from Maharashtra Energy Development Agency, and other colleagues. I will give them the mic. Please take 10-15 minutes to complete. Good afternoon to all of you. I thanks to the MNRE and all supporting organization for conducting such a type of workshop. We will share our experience, that is on microgrid. We have implemented the microgrid project in 4 villages of Maharashtra, and we have also one short film also on that. So we will also see this film here. Before this, I would like to add some things of one village where the microgrid project is completed, and now the project is working successfully. In Vidarbha region of Maharashtra, the Amravati is a major city and district place. From this place, nearly about 110 kilometers, there are 24 villages which are situated in reserve tiger forest area. And because of this tiger forest area, the conventional electricity is not reached in that area. Here we have installed 38 kilowatt solar power plant, operate solar power plant, and electricity is provided nearly about 154 villagers. And here, nearly about 20 street lights, 2 flour mills, and water supply scheme now is running, and all the tribal villagers are taking the benefit of these plants. So I request to start the short film. मेळघाट पर्वतरांगा म्हणजे महाराष्ट्राचं वैभव. प्रत्येक पर्वतरांग आपलं वैविध्य जपणारी, जैवविविधतेच्या या संपन्नतेनं नटलेल्या महाराष्ट्रातील सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेलं मेळघाट. कड्या कपारीतून बहरलेल्या निसर्गाच्या सानिध्यात कोरकू या जमातीचे अस्तित्व आहे. अमरावती या शहरापासून
तब्बल 125 किलोमीटर अंतरावर असलेले टेंभूर निढाणा हे दुर्गम गाव. एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा हीरक महोत्सव साजरा करीत होता, तरीही टेंभूर निढाणा या गावात 2019 पर्यंत वीज नव्हती. कोणाच्या घरात उजेड असायचा तर कोणाच्या घरात नसायचं. आधी तर सोलर पण नव्हता. कंदिलावर काम चालवायचो आम्ही. आधी घरात अंधार असायचा. अन्न शिजवताना अन्नामध्ये किडे कचरा पडायचा. आम्ही अंधारामुळे असं अन्न खायचो. नाईलाज होता. आता पूर्वी कसं व्हायचं, अंधारात साप येतोय घरात का विंचू येतोय की काय येतोय आम्हाला काय माहितीच नव्हतं पडायचं. आधी आमच्या गुराढोरांना बकऱ्यांना बिबट्या घेऊन जायचा. अंधारामुळं आमच्या गल्लीत येऊन कुत्रे पण घेऊन जायचा, शिकार करायचा. आता गेल्या 1-1.5 वर्षाआधी सौभाग्य योजनेअंतर्गत जी लाईट आम्हाला दिली गेली त्यांनी थोडाफार प्रकाश होता आमच्या घरात. पण आता जो लाईट तुम्ही लावलाय महाऊर्जाने गव्हर्नमेंट तर्फे, तर त्याने बराच फरक पडलाय. गावात उजळलंय आमचं गाव आता. सौभाग्य योजनेअंतर्गत 2020 मध्ये महाऊर्जाकडून गावांमध्ये सौर घरगुती दिवा प्रणालीमार्फत वीज पोहोचविण्यात आलेली आहे. परंतु शाश्वत व निरंतर विद्युत पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने सौर मायक्रोग्रिड प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. महाऊर्जातर्फे ITDPच्या निधीतून या ठिकाणी सोलर मायक्रोग्रिड प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. हा प्रकल्प 37.8 किलोवॅट क्षमतेचा आहे. या प्रकल्पात SPV मॉड्यूल प्लांटद्वारे दिवसभर DC विद्युत ऊर्जा तयार करण्यात येते. तयार झालेली विद्युत ऊर्जा बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीमद्वारे जमा करण्यात येते. त्यानंतर DC ऊर्जा AC ऊर्जेमध्ये बदलण्यात येते. विद्युत पोल व केबलद्वारे लाभार्थ्यांच्या घरी पुरविण्यात येते. वीज आल्यापासून आम्हाला बराच फायदा झाला. आम्ही TV बघू शकतो, घरात लाईट आहे, मोबाईल चार्ज करू शकतो. नाहीतर आम्हाला 10-12 किलोमीटर लांब जावं लागायचं मोबाईल चार्ज करायसाठी स्पेशल. आम्ही रात्री चांगला स्वयंपाक करू शकतो. आम्हाला स्पष्ट सगळं दिसतं. जगातील सर्व घडामोडी आता घर बसल्या आम्हाला कळू लागल्यात. वीज आल्यामुळे आमची मुलं कधी पण अभ्यास करू शकतात. आता वीज आल्यापासनं आमचे मुलं पण 10-11 वाजेपर्यंत रात्री झोपत नाहीत. आम्ही सुद्धा मग कामावरनं घरी आल्यानंतर त्यांच्यासोबत थोडा अभ्यासाला बसू शकतो. त्यांना पुस्तक दाखवू शकतो आणि त्यांना अभ्यास करताना बघून आम्हालाही जरा बरं वाटतं. आम्ही जे नाही करू शकलो आमची मुलं करू शकत आहेत. हा लाईट आल्यापासनं आमच्या जीवनात बरीच सुविधा झाली आहे, सपोर्ट झाला आहे आम्हाला. आता आम्हाला सगळं दिसू शकतं. स्वयंपाकघरात स्वयंपाकाला त्रास होत नाही. सगळं व्यवस्थित झालं आहे आता. मेढाद्वारे मेळघाटमधील अतिदुर्गम भागांमध्ये एकूण 248 सौर कृषी पंप बसविण्यात आले. आम्ही कधीच गहू नव्हता पेरला, पण आता गहू पेरतोय, चना पेरू लागलोय, भाजीपाला पण उगवतो. म्हणजे आम्हाला हे सोलरमुळे बरीच सुविधा झाली आहे. मेढाद्वारे सौर ऊर्जेवर चालणारी पीठ गिरणी देखील टेंभूर निढाणा या गावात स्थापित करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळालेले मेळघाटातील टेंभूर निढाणा हे 3रे गाव आहे. यापूर्वी धारणी तालुक्यातील चोपाण व चिखलदरा तालुक्यातील रेट्याखेडा येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करून घरोघरी वीज पोहोचविण्यात आली आहे. मी महाऊर्जाला धन्यवाद करतो. त्यांनी आमच्या आयुष्यात प्रकाश आणला. तर आम्ही आनंदी आहोत. मी मनापासून धन्यवाद करतो. या प्रकल्पामुळे गावकऱ्यांना 24 तास वीज मिळू लागली आहे. गावात वीज आल्याने गावकऱ्यांना मोठा दिलासा, आनंद आणि समाधान मिळालेलं आहे.
Now the government of Maharashtra has made the provision to implement this program. 20 hamlets per year. In the next 5 years, nearly about 100 villages or hamlets will be electrified through the microgrid project. And for this, 100% budgetary provision is also made. This is the success story of this project. Thanks. Thank you for sharing this. Maharashtra is one of the pioneer state in doing a lot of efforts in solar. And hopefully, next to electricity, you will also take up the application spot and try to include that in different form and non-form activities that will have a direct impact on the people's life. So that's one request. I can put it directly here. Thank you. Thank you for sharing that. We have with us Mr. Vipin Gupta. Please join us. He wanted to share his ideas and some inputs on in line with the topic. So I will request him to share his views. Yeah. Okay. धन्यवाद। मैं विपिन गुप्ता पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक एनजीओ हम लोग चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत। और जो हमारे पूर्व मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक हमें 5 स्टार हरित घर की संकल्पना दी, जिसमें कि एक रिन्यूएबल एनर्जी सोलर भी है। ऐसे घर जिनमें हम ये 5 चीज़ें समावेश कर सकते हैं। तो उसमें सोलर के विषय में मैं अभी तक जितने भी हमारे एनजीओज और जो है रूरल के विषय में जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं सोलर एनर्जी से, तो मैं अर्बन की तरफ जाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से 2017 के बाद से लगातार 24 घंटे बिजली हमें मिल रही है। और वो जो बिजली बनती है या तो हाइडल से बनती है या कोल एनर्जी से बनती है, जो कि पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 45% कोल एनर्जी जो हमारे प्रदूषण का बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने सोलर एनर्जी नेट मीटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट से कराया। और हमने ये अपने 5 स्टार हरित घर के अंतर्गत पिछले 3 साल में कम से 1500 घरों को हमने नेट मीटर सिस्टम से जोड़ा, जिससे कि सरकार कहती है कि अपने आप को बिजली में आत्मनिर्भर बनाओ। तो अपनी बिजली हम स्वयं बनाते हैं। ऐसे 1500 घर हमने सौर ऊर्जा से नेट मीटरिंग के माध्यम से जोड़े। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये 5 श्रेणियाँ, इसमें जल संरक्षण भी है और एक हरित जो बगीचा है जो पॉल्यूशन को दूर करने के लिए मेन उद्देश्य है। सौर ऊर्जा का भी पॉल्यूशन सॉफ्ट एनर्जी, और ये इसके अंदर कूड़ा सेग्रीगेशन है। पॉलीथीन को हम घर में न लाएं, पर्यावरण को बचाएं। और एक साथ में पक्षी घर पशु घर है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सौर ऊर्जा को अपनाएं और देश में से प्रदूषण दूर करें, उसमें अपना सहयोग करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसकी ओर बहुत चिंतित हैं और कहते हैं अपनी बिजली स्वयं बनाएं, विद्युत में आत्मनिर्भर बने। ये मेरा एक संदेश है, मैं सबको एक संकल्प पत्र के माध्यम से प्रेषित करता हूं। और मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको इसका एक संकल्प पत्र प्रेषित करूंगा। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Vipinji, for this interesting concept and 5-star. Well, thank you very much. Now I will request Mr. Surendran. It's a startup which is more focusing on climate education for the family. So he wanted to share. Good afternoon to everybody, especially for giving me this slot for me. See, my inspiration come from our beloved Prime Minister Modi ji speech in UN Assembly regarding this solar alliance and carbon emission reduction and all this speech. When I hear that speech, I thought just like as a PhD student, he was talking about this carbon emission reduction and all these things. I never see anybody in the world leaders talk about like that. So that inspiration come to me that we have to do an individual voice, do something. That's why I came to know at home, let us start. That's my inspiration. So what I done it, I observe my son. He's doing struggle for his son for assignment at his school. Daughter-in-law also is struggling for that. A teacher will say some assignment to this son. His parents will be running for behind that. So I thought, why is this much tension they are taking? Okay, I can use this idea for this awareness to the parents. So I make an idea, program for this in the school. What is this? A triangle program. Teacher, students, and parents. Teacher will give an assignment to the students. You go and work with your parents and get a result. What is it? Just, I start with a waste audit. But waste audit, I brought it CO2 inside. CO2 also, because our household facilitation, there is a lot of CO2 is coming. So we don't know from where this is coming and how is it. So we are providing some data for this power. Power is there, and gas and petrol, these three elements I have taken it. And providing this data to the teacher, and teacher will give to this students, and they will work out at home. And they find out how much per month. They audit 1 month, how much it is. Okay, maybe it is economic standard. Depends upon the economic standard, that level of the CO2 is emission from the household facilities. So maybe it's 500, something like that. So we evaluate, we get this input from the parents, and with the help of children, involve the children also, how much kilogram of CO2 is coming out of their house. And after that, we are requesting them, use your own idea and try to reduce this. We will give 1 month or 2 months. 2 months period we are giving. Now, after that, you write up also how you reduce this. How you reduce this. We need proof that. That's proof also. Not like that. Then what we do, when they give this, we evaluate, and best idea, we give a price tag. That's my, from my own pocket, I'm giving this price for them. Because initially, why this is, I want to work, at least this is startup. This is startup means a one-man show. So they work out this very well, and they give the best idea, I give the price tag for them. Then I circulate this idea to the whole class and the whole division. And this idea, they will work out. And next stage is another things. When they work out this, they save some energy at home. At home, they come to know that this is, it is wonderful. It saved the 200, 300 rupees or saving. This 300 rupees, what I do, because
I have a challenge to this school also. What is the challenge, you know? Within 2 years period, I will meet the power needs of your school free of charge. That's my challenge. That is my challenge. And free of charge, I will meet the power needs of the school. So each student is 300 rupees average. If they save that, that means 6 lakh rupees. Can get easily loan from any SBI people are here? No, I don't think this. Okay, you can get some green loan or something like that. You get it, and 15 kilowatt, 15 to 20 kilowatt. That you can make a solar panel there. When I fix the solar panel, what we do? We'll keep it underneath some greenhouse like that. We give some vegetable garden like that under that. We'll make that also. And so this project, I want to do it not in one place. This is a one-man show. I want a Ministry of Renewable Energy to do all this in school. All this school, then you just imagine how much power we can save. We can save tens of millions tons of CO2 emission. But commitment. So commitment is very important. Commitment from the all side, not from one side. From the individuals and all this side, we have to. That's why I came here. I took a lot of struggle to come here. This gentleman give me the slots. I request him, please. I want to present this. This is simple things. I want to present this. Please give me a help. And I have another request to this ministry. What is that request? You know, anywhere if there is any interview board, first you have to ask about climate change. What is climate change? What is the reason? How? How you can prevent it? And waste disposal management also. This question should be, first you have to, any ministry, any appointment, even in private, you can give a circular to the people. So all companies, you have to ask the employee first regarding the climate change, because it's a big challenge for our children are going to face. Because maybe I'm 72 years old, maybe maximum 10, maybe 20 or something like that. And not 20, maybe less than that also. That's I don't know, but our children has to benefit. That's my aim. Okay? Sorry for the delay to you, all these people. Okay? Thank you very much for everybody. Okay? Okay. Thank you for that. Nice thing to reflect on. I will pass it on to Colonel Manish, President Clean. Yes, two things. Before going for vote of thanks, to facilitate two things. They want to share some inputs. You can facilitate that part. But we got limited time for both. So keep it less than 10 minutes. Sure, thank you. So I'm Colonel Monish Ahuja. I'm the new President Clean, and it's my responsibility to thank each and everyone who's present here. But before that, there are two gentlemen who would like to talk about the work that they do, and one of them is from Alliance for Rural Electrification. So only today, earlier today, between ARE and Clean, we have signed a MOU, and this now allows the good practices that ARE does, like the work that Clean does in India. It allows the cross-pollination of Clean member companies to have a global outreach, and vice versa. The interest of the global companies in the Indian market, ARE as a platform would facilitate that. So we have signed a MOU today at REI, and with this I invite Mr. Deepak Mohapatra to share his views with respect to ARE and also the MOU that is signed.
We'll be conscious of time, Deepak ji, so 5 minutes. Thank you. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much for this very good opportunity, distinguished ladies and gentlemen on the stage, and my dear friends out there. It's an honor to be here today. My name is Deepak Mohapatra. I am the Senior Officer, Business and Market Development at the Alliance for Rural Electrification. मुझे आज बेहद खुशी हो रही है आप सबके समक्ष उपस्थित होकर और आप सबके बारे में जानकर, especially the self-help groups which were presented over here. And Selco Foundation, thanks a lot also for presenting the case studies from my state, Orissa. मेरी पैदाइश भी उड़ीसा से हुई है, तो मुझे जान के बहुत खुशी हुई. To present ARE, Alliance for Rural Electrification. It's an international independent business association. ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है जो कि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत काम करती है और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए के तरफ अपना रुझान है. So the inclination towards the rural electrification is what we are focusing on, and how we do it by empowering the private sector in cooperation with the public sector. We are active all over the world, federating more than 200 members worldwide, companies like yours, in order to achieve the common goals, which is SDG 7. Now, as Colonel Ahuja already mentioned, to integrate our work more in the Indian context and also vice versa, we have today officially entered into a partnership which was signed recently, and we have done the MOU exchange with the very kind presence of Colonel Ahuja. So I would like to also take the opportunity to thank you today. On the stage, we also have GIZ India, Ms. Sani. We also had a discussion today, and looking forward to working with you together in future as well. Ms. Imani, MNRE is also a very distinguished and very notable entity in India, and knowing the fact we are the international association, it's also nice that we will be working together with you in future, in presence of Clean. Now, to talk a little bit more about the partnership that we are entering into with Clean, there are 4 different verticals to it. First one is policy and advocacy. Second one is private sector business development. Third one is capacity building. And the last one is communications, of course. So what we do in a very international context with our best practices in Africa, in Latin America, and Caribbean, as well as in Asian continent, we want to scale it up also in the Indian context to bring in the experiences of the international partners to India and see how this interest can be scaled up, finances can come in, policy and regulatory discussions can happen, and the best practices can be shared. So with that goal, I would like to also take the opportunity from the stage to announce our official partnership, and we are very much welcoming all of you to get in touch with us and to get to know us more, and we will be more than happy to help you. Thank you so much for this opportunity. Thank you, ladies and gentlemen. It was a pleasure. Thank you. Thank you. So thanks, Deepak Mahapatraji, for first traveling from Brussels to Delhi to attend this event. On behalf of Clean, we thank you. Next, I have the task of inviting Deepak Sharma ji, the State Head C&I UP. So if you'd like to come up, please. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you, Yashwant ji, for giving me the opportunity. I am Deepak Sharma. I represent Smart Power India. So we are direct subsidiary of Rockefeller Foundation. मैं हिंदी यूज़ करूँगा so as to connect with everyone. बहुत ज़्यादा thrilled हूँ, बहुत ज़्यादा excited हूँ इस टाइम पे अभी जो सेशन हुआ, और मेरे लिए बड़ा टफ है ये इस बात को जस्टिफाई करना कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं रूरल स्पेस में. स्मार्ट पावर इंडिया एक ऐसा इनोवेटिव कंसेप्ट लास्ट 8 मंथ्स से रन कर रही है रूरल इंडिया में, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा. इसमें हम जनरली ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनको सोलर के बारे में पता है. हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग मार्केट की ये रही है, गांव में लमसम हर बंदे को सोलर के बारे में पता रहता है, राइट, बट उसको ये नहीं पता रहता कि उसका सिस्टम चलेगा सोलर से या नहीं चलेगा, और अगर चलेगा
तो कितना खर्चा उसके सिस्टम को लगाने में आएगा, और स्पेशली अगला मेन स्टेप कि मुझे लगवाना किससे। एग्जैक्टली ये वैसी ही एनालॉजी है कि मुझे मेडिकल पॉलिसी खरीदनी है, किसकी खरीदनी है, कितने लाख की खरीदनी है और किससे खरीदनी है, राइट। तो हमने इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए पिछले 8 महीने से वर्किंग करी यूपी के कुछ एरियाज़ में, स्पेशली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाते हैं। सो वी आर वर्किंग विद अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट, जिसमें हम कई सारे एनजीओज़ के साथ में कोलैबोरेट करके लीड जनरेशन करते हैं। बाय लीड आई मीन हम ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सोलर से उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट एज वेल। सेकेंडरी, हम ऐसे ऑथराइज पार्टनर्स को हमने अपने साथ में अलाइन किया हुआ है जो कि डेडिकेटेड तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्बन में वो इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी स्टाइल से, उसी क्वालिटी एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए वो रूरल में इंस्टॉलेशंस करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट, आई एम नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, तीसरा एस्पेक्ट जिसमें हम लोग मेजरली वर्क कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग द फाइनेंसियर्स इनटू दिस स्पेस। हमारे 90% कस्टमर्स जिनको हमने ये सोलर का एक प्रोडक्ट ओन करने में फैसिलिटेट किया है, मेजरली इन सबका सिबिल स्कोर -1 है। आई एम श्योर आप में से सबको पता होगा व्हाट एग्जैक्टली द सिबिल -1 मीन्स। कोई ट्राई करना चाहेगा? सिबिल स्कोर -1 का मतलब क्या होता है? ओके, मेरा सिबिल स्कोर लेट्स से 400 है, मुझे कोई बैंकर लोन नहीं देगा। आप में से किसी का सिबिल स्कोर 700 है, आपको इजिली बैंक लोन देगा। बट व्हाट अबाउट सिबिल स्कोर -1? So in finance we say giving loan to an unknown commodity is a very dangerous thing. कोई फाइनेंसर, कोई बैंकर इनको लोन नहीं देता। तो लाइक वी हैव प्रमोटेड फाइनेंसियर्स जो कि इन लोगों को लोन देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंस के माध्यम से, ताकि ये लोग सोलर को ओन कर पाएँ। स्मार्ट पावर इंडिया का जो पिछले 8 साल की वर्किंग रही है इंडिया में, वो मिनी ग्रिड्स में रही है, जिसमें हम डायरेक्टली लोगों को एनर्जी एक्सेस में सपोर्ट करते थे। बट नाउ वी आर लाइक हेल्पिंग दीज रूरल पीपल सो एज टू ओन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। लास्ट में एक मैं बहुत छोटे से अपने इनोवेटिव असाइनमेंट के बारे में आप सबको अभी बताना चाहूँगा। हम लोग एक बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 10 किलोवाट का कोई बंदा अगर सोलर प्लांट लगाता है, उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 के आसपास पैसे आए 10 साल तक, ये हम इंश्योर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर नाउ सेलिंग देयर कार्बन क्रेडिट्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स, और इट इज़ ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट। वी आर बेसिकली वर्किंग विद एन RMS मॉडल, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कितनी बिजली, कितना यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं सोलर की, और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लोग बेचेंगे। सो आई नो many of you are like working in this space, but we are also working in this space. Very innovative concept where we are working different stakeholders on a common platform. And I would be requesting the support of MNRE, and we will be soon reaching out to you so as to have some sort of support from you as well, from the nodal agencies as well, so that we can scale this concept of, many reports say it's around 9 gigawatt of market space available in UP, Bihar, Jharkhand and Odisha, and the penetration level is still 5%. So there is still 95% of market available in these rural areas. So you can imagine, and you will not believe, ma'am, major our channel partners, they were having initially turnover of around, if I talk about between November 2021 to March 2022, they were having turnover of around like 1.5 CR. Now, by March 2022 until date, they have crossed almost like 3 CR of revenue. And these are district-based channel partners, district-based installers who are like working for a particular ground. So like we have facilitated a very huge market to them so that they can double their revenues, and that too in the rural space itself rather than going into the urban space. So thank you, Yashwanji, for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you for your comments, and so, it's been really a delightful experience, and thank you so much to all
the people who have traveled from Orissa, Jharkhand, UP, Himachal, Meghalaya, I think the work which is happening in the rural segment, in the villages, in the decentralized renewable energy segment is the paradigm shift in the energy segment that we are going to see in India. And like the Honorable Prime Minister has been guiding us to be Atmanirbhar, I think while each one of us would become energy sufficient, energy reliant, and if we are able to produce the energy that we use within our zone of influence, I think we would have done a good service for our lifetime and for India as a whole. With that, specifically, this is a start point that most of you all, what you all have presented are doing. And it's like a movement. So when you get that success, that first success, and so many of our lady sisters who have traveled, who have mentioned it, that's the driver. It then pushes you for the next level of what next. The first loan that you are able to get is the barrier that you have crossed. And after that, your next level is higher than that. So keep working on it. I think two aspects which are very important in the segment of DRE, these are patience and perseverance. आप जो काम करने में सक्षम हैं, खुश हैं, वो आपको एज एन इंडिविजुअल ड्राइव कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है. My humble request to each one of you, please do it. Don't stop. Because शायद किसी को भाग्य से, लक से पहले या किसी को थोड़ा लेट, but definitely you will get success. This is something I can tell you from my personal experience. So I'm not too sure if many of you in the room know who I am. So I'm Lieutenant Colonel Monesh Ahuja. I am the Chairman, Managing Director, Prespel, Punjab Renewable Energy Systems Private Limited. We are presently India's largest company in the biomass bioenergy space. We started work in Punjab, but today we work and operate out of 15, 16 states in India. We are 300 plus full-time employees. And very recently, thanks to the members of Clean Network, I am the President Clean for the next 3 years. It's an additional responsibility which comes upon me. I am also the Chairman CBEII, which is the Confederation of Biomass Energy Industry of India. And I think the work cut out in both the space is slightly different. Personally, my heart beats for decentralized renewable energy. And it's a misconception that the DRE project has to be small. No. A DRE project is as large as you can have an investment. A single DRE project can be as large as an investment that the large business houses think of. And I'll give you a specific example over here, support of MNRE as well. And to be able to achieve what most of you have achieved, and you are going to achieve much more, buy a good pair of shoes. क्योंकि जूते जरूर घिस जाएंगे हिंदुस्तान में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. But once you do that, you will be the trailblazers. आप leaders होंगे, inspiration होंगे अपने village में, अपने तालुका में, अपने ज़िलों में, districts में और state में. And I think that's the recognition which Clean brings to all of you to come to a platform like this. And from this platform, I can assure you that your stories will be circulated within India globally from the Clean platform. So आप Clean को लिखिए, जो आप share करना चाहते हैं बताइए. We will get our content editors and writers to review it, publish it so that we can bring you all to the forefront and to the stage. That's the intent of Clean. Clean में हम यही करना चाहते हैं कि जो success stories हैं उनको celebrate करना चाहते हैं, और जो शायद not so successful हैं और अभी भी काम कर रहे हैं उनको motivate करना चाहते हैं कि आप भी इस space में आइए. One key element which everybody alluded to, या जिस सब ने जो जिक्र किया, एक finance की बात consistent रही सबके साथ.
how do you break that barrier of finance with collateral or without collateral? और वो फैक्टर एक, चाहे आप बैंकिंग सिस्टम लें, चाहे आप एनबीएफसी सिस्टम लें या गवर्नमेंट की एजेंसीज लें, क्राइटेरिया आपको मीट करने पड़ेंगे. जब तक वो टिक बॉक्स सारे फाइनेंशियल एलिमेंट्स का आप नहीं कर पाएंगे, या जो टिक बॉक्स नहीं हो रहा है उसको कैसे सपोर्ट करेंगे या कैसे मिटिगेट करेंगे, फाइनेंस मिलना हरदम मुश्किल रहेगा. So please also, while you are focused on your work and your business and the project and the technical aspects, अगर आप खुद नहीं करते हैं तो कहीं से सपोर्ट लीजिए, बट अराउंड योर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी देखना शुरू करिए. रूरल सेगमेंट में द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिटर्न इज लो, एंड हेंस कैपिटल वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा है या एक्सपेक्टेशन है. सो फाउंडेशंस लाइक CW, सेल्को, क्लीन, GIZ are the ones which are supporting so that ये finance आपके पास भी available हो. So with that, the formal vote of thanks, I thank MNRE for their gracious presence, Dr. Vipin, Ms. Himani Mehta, thank you for your time. I thank the beneficiaries, specifically the states Odisha, Jharkhand, UP, Himachal, Meghalaya, and most of these states we are working, and I have personally traveled to all the places, including my friend from Meghalaya, the Garo Hills that he spoke about. I personally, as an individual, consume the turmeric or haldi from Meghalaya every day. So it's magic. Also, the organizations who have supported this, Selco Foundation, CEW, GIZ, Clean, MNRE, thanks for putting this together and bringing the DRE segment to the forefront. One of the most important things. And one part where I talked about scale on the DRE segments. So the E part is energy, it's not electricity. And I think that's the message I would like to give MNRE to carry back. Energy in multiple forms. It could be heating, cooling, it could be a light in your house, it could be, purposes of what you do in the field, solar drying, etc., all forms of energy. And hence, the DRE segment, we would want to cover such forms of energy. Transportation, CBG, biogas, liquids from biofuels, all of it is going to happen DRE. Last but not the least, MEDA, thank you, my home state of Maharashtra. So fantastic to see you all here. Hope to be meeting you all soon in Bombay, Pune, and collaborating in Maharashtra as well. Thank you so much. And my colleagues at Clean, most of them I met for the first time today, ironical. It's only been a week that I've been at President Clean. So thank you so much. They have been following up. They've been coordinating for me to be here, coordinating the event. And it's really been, personally for me, a wonderful experience. We hope to be back again next year and also doing many more events. Thank you, Jai Hind. Ladies and gentlemen, I would like to extend my gratitude on behalf of REI. Thank you so much to our distinguished speakers. Thank you so much for joining us here, taking your precious time out. It was indeed a very inspiring session from the villages of Meghalaya, from the villages of Amravati, Maharashtra, and to our solar Didi. It was really, really inspiring. And with this, we are coming end to the last session of today. I would request everyone kindly proceed towards your tea, coffee, and enjoy the refreshments. And with this, we are coming closer to the end. Thank you so much once again on behalf of REI. Thank you so much for joining us here. And last but not the least, can we have a huge round of applause? Thank you. Thank you. The ministry is very soon going to issue a notification. It is a kind of clarification like virtual net metering arrangement. Through that, you can set up a solar plant at a distant land, and you can get subsidy of 40% on that. So we will be having a detailed notification very soon on that.
So our colleague from MEDA has also spoken about the microgrid. So that notification will help microgrids also. Okay, thank you.